So Shalin, you are just saying that you are nervous and you are sitting next to her and you are really worrying about the show, that how you're gonna perform. Are you practicing? Yeah, these days when I'm taking a bath also I practice. I feel shy. Taking a shower and I'm like, welcome New York, thank you so much. No, of course, yeah, it's fun for me, it's new for me. I am thrilled as much as I'm nervous, I'm excited, and I'm little prepared. If not, ma'am, I'm so sorry. From now, obviously, I'm saying sorry. But yeah, let's see what happens in the show, yeah. It will be something different. You have Madhuri ma'am with us in the show, and you have a little Charlene element also. So you'll have some nice Charlene element. Thank you. क्योंकि मीट एंड ग्रीट का एक कॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में कि मैम कोई आते हैं 2-4 अवार्ड देंगे और अपना मीट एंड ग्रीट करके निकल जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने जब इस कंटेंट को बनाया, मैडम शी पर्सनली इन्वॉल्व एंड शी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट वी डूइंग नेवर डिड बिफोर. सो दिस इज समथिंग डिफरेंट. इट्स नॉट अ मीट एंड ग्रीट, इट्स अ मीट एंड ग्रीट बट इट्स नॉट अ मीट एंड ग्रीट. आई जस्ट वांट टू लेट यू नो अबाउट दैट. सो इसलिए ये जितने भी लोग हैं शायद टिकट बाय करके आ तो सबको अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगा. प्लीज, थैंक यू. Hello Madhuri ji, I'm Jay Singh from Hum Hindustani. I have my partner Bhavna Sharma with me. Hello. Hi. Thank you Atik bhai. This is the greatest opportunity in last 3 years what we all were talking. So आपकी routine क्या है, राज क्या है, exercise है, dance है, diet है? देखिए, किसी औरत ने मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा है. आप पूछ रहे हैं. और जवाब आप देंगे, I know. मतलब आप जवाब सुनेंगे, आप सिर्फ खोके ही रहेंगे ऐसे ही. आप बोलते रहिए, है ना? आप पूछ रहे कि क्या वहाँ पहुँच ही नहीं सकते. नहीं, लोगों की नजर का कसूर है. Beauty is in the eye of the beholder, I always say. और ये लोगों का प्यार है जो उनको ऐसे लगता है कि आई एम गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि उनका प्यार उतना बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे. एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. इनफैक्ट माधुरी जी, आतिफ भाई ने पिक्चर डाली थी डॉक्टर नेने के साथ में, आपके साथ में और डॉक्टर नेने के साथ में भी. आई थिंक कमाल के हैंडसम लग रहे थे वो. अभी यहाँ पर उन्होंने एनआरआई आपको पूछा और सारा यूएस के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा. एक मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ. कभी ऐसा हुआ है कि आपने डॉक्टर नेने से आपने कभी पूछा हो कि तू शायर है, मैं तेरी शायर? इतनी हिंदी नहीं आती उनको. वो मराठी बोल लेते हैं लेकिन हिंदी नहीं आती उनको. But he's very fit. He's very fit. बोला ही है तो काही मराठी गुलाबी साडी तुम्ही केलेला. हां, बरोबर. एकदा जरा प्लीज सिंग तर करू शकतो. नाहीतरी म्हणा. एक कोई लाईन हो जाए मॅम. अरे मराठीमध्ये काय, सर्वांना माझा नमस्कार. आणि तुम्ही हा शो बघायला नक्की या, कारण खूप खूप मजा येणार आहे. आणि मी थांबले तुम्हाला भेटायला. क्या बात है, क्या बात है. Such a humble human being, such a kind person, and what makes your success so successful? What keeps me going is my love for what I do. It keeps me going because ever since I was 3 years old, I have learned dancing. I started learning Kathak, and then of course I came into films and I started acting in films, and I've been doing that for a long time. But what never fades away is the love for what I do, and that's what keeps me going. So if you choose something that you love, you will never work one day in your life ever, because you'll be looking forward to doing that every day of your life. I do that. Hi Madhuri ji, I'm Shweta Patil from TV Asia. And then after all this, you look so amazing. How? Like, how do you do this? How do you manage this? Well, I think it's to create a work and professional balance. I think it's very, very, very important to know your priorities. And my priority is always with my family. So my work, I arrange around my family. So for me, when my children need me, I'm there. I'm not working. Now I'm an empty nester. Both my kids are in college. And so I'm like, I can do whatever I like. But still, you have your kids, so you have to think about them first. So everything, I know exactly what I want from my life. And I know that
these are my priorities. And once you have that very clear, it's easier to get the balance. And my question to you is that you've been on the big screen and on the OTT both. So I want to know what's the difference between both of them. How do you feel? Difference between what you think about it? I think there is no actual difference between movies or OTT. Yes, in the movies you have to tell your story within 2 hours. It used to be 3.5 hours, 3 hours, now it's 2 hours. You people don't have that much patience anymore. But for a series, you can tell your story over so many episodes, 8 episodes, sometimes 22 episodes. And so the character has a lot of space, and a lot of characters around them also have stories. So how this character interacts with them, you can create so many worlds within that world. And when you're doing a movie, of course, there's one particular story you're trying to tell, and that's what is told. I think that is the only difference between, but as far as an actor, there's no difference. It's like you're playing a role there and you're playing a character in a movie. Especially for ladies over here, what kind of message would you want to give them to make it real? Very nice. Yeah, it's a very vast subject. Long. But Long. yeah, it's vast. But I would say that what is women empowerment? When you get to make your choice to do what you want to do, and you don't really have to depend on anybody else. That is women empowerment for me. That you can get to choose what you want to do. But a lot of times, it's not possible for the woman. And how then do you go out and say that, you have to do this? It's hard. But through the characters I play or through the roles I play, I try to inspire people. I try to inspire the women. Like there was a film I did called Mrityudand. Of course. It's set in a very feudal, kind of, she gets married into this feudal family. She comes from a well-educated family, but she was treated differently. She was treated as an independent person, not a woman or not a man. She was her own person. And when she comes into this feudal family, she realizes that the treatment of women is different in this house. And how she rises up, and how she defends her rights. And how, of course, in the end, she kills the villain. I don't say you should do that, but that's dramatization to the extreme. But everybody has to fight their own battles. And if I can do roles which can inspire people to do that, then I think I have done a little bit of the work. And the question I have for you is, what have you witnessed change and evolve in the music and entertainment industry? I think the charm of the real musical instruments that we used to have, like Lakshmikant Pyarelal ji. I have witnessed a recording during Kalnai, Choli Ke Piche Kya Hai. There were like so many violins, like 10 of them, and there were dolls and this. Everything was in one room, and everything was recorded live. And just sitting there and listening to that was amazing. But today everything is done on the computer. You don't really need the real instruments and everything. I guess with every generation the music will change, and the change is going to happen. You cannot deny that. But we still have so many talented singers and talented musicians, and the music industry is full of it. There's so much happening everywhere. कपिल शर्मा का शो था, शाहरुख खान साहब से यश चोपड़ा साहब के बारे में बात हो रही थी, और उन्होंने बताया कि वो दिल तो पागल है का नरेशन था। यश चोपड़ा जी बहुत ही दिलचस्प अंदाज में नरेशन करते थे। So I think those memories must be truly. आपका क्या थॉट था जब आपको स्क्रिप्ट नरेट करी थी यश जी ने? नहीं, नरेट मुझे आदि ने की थी स्क्रिप्ट। जब हम सेट पे जाते थे, जो यश जी आके इंस्ट्रक्शंस देते थे, तो उनका इंस्ट्रक्शन शॉर्ट हैंड में होता था। जैसे माधुरी तुम इधर से आओगे, वो बेटा मतलब ऐसा कर लेंगे, उसको रोमांस एकदम ऐसे करके निकल जाते थे। मैंने बोला शाहरुख इन्होंने क्या कहा अभी? जस्ट से So he says, don't worry, he's saying it should be very romantic. वो मुझे बताते थे कि क्या वो बोल के गए हैं, because वो शॉर्ट हैंड में ही बात करते थे हमेशा। मेरी शायद दुनिया में शायद कोई भी ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिसको इतने बड़े आर्टिस्ट ने
इस तरीके से लिटरली पूजा और उनकी पेंटिंग्स बनाई, फिर फिल्म भी साथ में बनाई. That was a simply sensational. But I think he has seen your films like hundreds of times. Certain films उन्होंने मतलब सैकड़ों बार देखी थी. जी, हम आपके हैं कौन है something he really loved. जी. और उन्होंने इतने सारे पेंटिंग्स भी बनाए और he was such a lovely person. और मतलब इतने वो अपने आर्ट से जुड़े हुए थे कि डेनवर आए थे एक बार विजिट करने के लिए मुझे, और मैंने उनसे कहा कि आप कुछ मत कीजिए, डोंट पेंट, जस्ट सिट, जस्ट रिलैक्स, आप चाय पीजिए, यू नो, जस्ट हैव फन, जस्ट. बोले मुझे पनिश क्यों कर रही हो? मैंने बोला क्यों? बोला आई एम द मोस्ट रिलैक्स व्हेन आई पेंट. तो बोले चलो अभी वी आर गोइंग टू गेट सम कैनवस एंड आई एम गोइंग टू पेंट. तो मैंने कहा जब वो आए तो एक ही बैग लेके आए थे, छोटी सी ट्रॉली बैग. तो मैंने कहा अच्छा तो पेंट भी लाने पड़ेंगे. तो मैंने वो बोले नहीं नहीं ये क्या है पेंट्स. मैंने बोला आपके फिर कपड़े वपड़े कहाँ हैं आपके सब, आप सिर्फ पेंट ही लेके आए. बोले हाँ ये क्या पहना है मैंने, बस हो गया. So they said let's go shopping. So we took him shopping and he was that kind of a man. It's about 10 years on 10th August. उसके बारे में अगर आप कुछ थोड़ा हाईलाइट कर दें. Yeah, about my first film. मुझे याद है जब राष्ट्रीय प्रोडक्शंस ने मुझे अप्रोच किया था कि ऐसी एक फिल्म है जिसमें हम चाहते हैं आप काम करें. तो मतलब मेरी पूरी फैमिली में हलचल हो गई क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स महाराष्ट्रियन फैमिली, यू नो, जिसमें किसी ने भी कभी फिल्मों में काम नहीं किया था, कभी भी. एनी जनरेशन यू टेक, नोबडी हैड एवर वर्कड इन फिल्म्स. और तभी लगता था वो फिल्म्स बिग बैड वर्ल्ड एंड यू नो ऑल दैट. तो बहुत सोचा करना है नहीं करना है क्या करना है. आई वाज अ कथक डांसर बेसिकली, और स्कूल में आई यूज्ड टू do plays and I used to dance and I used to be always on stage. I used to sing, सब कुछ. तो मेरी जो ग्रेट ग्रैंडमदर थी उनसे पूछा हमने परमिशन के लिए, and we said can we do this because ऐसे एक ये आया है. तो she was the one who said मैंने देखा है she dances so beautifully और you know if she does hard work वो ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाएगी.